नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि मैं द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड को कवर करा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ये हमारा पार्ट 24 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 to 23 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लो। मैंने उसको प्लेलिस्ट में डाल रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉस्टर, कॉर्नर एंड फोर्ड। ओके, सो ऐसे से हम लोग काफी सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, which novel by E.M. Foster deals with the complexities of colonial situation in India? So the correct answer is A Passage to India, right? Next, in A Passage to India, which aspects of the British approach to life does Foster criticize? So their inflexibility. ठीक है, next, in Howard's End, what do the Skelgel family symbolize? So inner life and the importance of spiritual values. Okay, next, what is symbolized by the struggle for the house named Howard's End? So the correct answer is the future of England itself. Okay, next, which novel by Foster contrasts refined English gentility with sensuous Italian vitality? So the correct answer is A Room with a View. ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है, which literary troupe does David Lodge associated with the modernism and symbolism? So the correct answer is Metaphor. Next, according to David Lodge, which style is associated with realism? So metonymy. Metonymy is the correct answer here. Okay, next, in A Passage to India, the description of Chandrapuri as having inhabitants made of mud is an example of. So it is an example of metonymy. Okay, next, which 19th century novel mentioned in the text uses metaphoric mode? So Bleak House. Bleak House is the correct answer here. Okay, next, what does the presence of mud symbolize in A Passage to India? So it symbolizes monotony and abasement. Okay, next, which literary figure is associated with the novel Lord Jim? So Joseph Conrad is the correct answer here. Right, next, what is a central theme in Joseph Conrad's Heart of Darkness? So the correct answer is colonial exploitation. Okay, next, Alfred Lewis placed Joseph Conrad in which literary tradition? So he placed him in the Great tradition. Okay, next, which Conrad novel involves a journey deep into Belgian Congo? So the correct answer is Heart of Darkness. ठीक है, next, Ford Madoc Ford is best remembered for which novel? So is remembered for The Good Soldier. Okay, option number A is correct here. Right, next, what narrative technique is Joseph Conrad known for developing? So he has developed flashback and time shifting. ठीक है, next, who among the following collaborated with Joseph Conrad on the novels The Inheritors and Romance? So Ford Madoc Ford. ठीक है, next, what critical work did E.M. Foster publish that was influential in the study of the novel? So aspects of the novel is the correct answer here. ठीक है, next, what is the title of D.H. Lawrence's first major novel which is largely autobiographical? So Sons and Lovers. ठीक है, next, in the
rainbow, what is the key theme Lawrence explored in the context of individual fulfillment? So, marital relationship. Okay, next. Which novel by D.H. Lawrence was suppressed a month after its publication in 1915 for being indecent? So, The Rainbow. Next. What is the central concern in D.H. Lawrence Woman in Love? So, human relationship is the main concern here. Right. Next. In D.H. Lawrence Woman in Love, who are the characters involved in a close male-male relationship? So, Rupert Brinking and Gerald Crick. Okay, next. Which novel by D.H. Lawrence involves themes of class shift as a result of World War I? So, Lady Chatterley's Lover is the correct answer here. ठीक है, next. अब यहाँ से हम लोग वुल्फ एंड जॉयसी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ से मेरा मतलब है वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस. Virginia Woolf's first major experimental novel that used the stream of consciousness technique is so Jacob's Room. ठीक है, next. The Bloomsbury group of Virginia Woolf was a central figure is best known for its influence on British culture from the 1920s and 40s. ठीक है, next. In which of Virginia Woolf's novel does the character Clarissa Dalloway appear? So ये ना क्वेश्चन था हमारे CUET का, I guess. हाँ, तो उसमें कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल से एंड जेन एयर जो नॉवल है शार्लेट ब्रॉन्टे का उससे. ठीक है, उससे मींस की प्लॉट समरी दी गई थी, एक एक लाइन में दिया गया था आपको. ठीक है, कि ये वाला इंसिडेंट ये वाला इंसिडेंट ये वाला इंसिडेंट कब कब हुआ था, उसको आपको प्रॉपर अरेंजमेंट में करना था ABCD के फॉर्म में. ठीक है, या जो भी आपको करेक्ट आंसर हुआ उसके फॉर्म में. एंड हाँ, जेन ऑस्टन की जो नॉवेल्स है उससे भी क्वेश्चन आया था कैरेक्टर बेस. यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स दिए गए हैं, यहाँ पे उन कैरेक्टर्स किस किस नॉवेल में है उस नॉवेल का नाम दे रखा है. ठीक है, अब आपको मैच करके यहाँ पे सही आंसर को टिक करना है. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन रहा था CUET का इस बार का 2024 का जो मैंने देखा. Virginia Woolf's essays, which has come a classic statement of feminism, is titled So a Room of One's Own. So ये नॉवल इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये थोड़ा सा फेमिनिस्ट टेक्स्ट है. ठीक है, और इसको आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए क्योंकि बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए. एंड हाँ, इसकी पब्लिशिंग डेट देख लेना क्योंकि क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जा रही है ना. सो कर लेना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. Which of the following novels by Virginia Woolf is known for its use of poetic symbolism, especially with the lighthouse? So of course ये To the Lighthouse है, one of the most important novel of Virginia Woolf. इसका कैरेक्टर आएगा ही आएगा एंड आपको बेसिक से समरी पता होनी चाहिए. James Joyce first major novel which is semi autobiographical. ठीक है, which is semi autobiographical and tells the story of Stephen Dedalus is so this is a portrait of the artist as a young man. ठीक है, option number C. Which novel by James Joyce is considered the high point of modernism and parallels Homer Odyssey? So this is Ulysses. Okay, next. The narrative technique predominantly used in James Joyce's Ulysses to depict the flow of characters' thoughts is called. So of course this is stream of consciousness, right? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है अपने MH अब्राहम्स की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने MH अब्राहम्स की पूरी बुक को MCQs में कवर किया है. मैंने उसमें आप लोगों को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत अच्छे से समझाया है, तो प्लीज जाके उस प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना. ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए वो प्लेलिस्ट, इसलिए प्लीज उसको जाके एक बार कवर कर लो अच्छी तरह से. नेक्स्ट, जेम्स जॉयस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज विच इंक्लूड द डेड इज टाइटल्ड सो डब्लिनर्स.
In Joyce Finnegan's Wake, which element symbolizes the cyclical nature of history and human experience? So this is the river. Novels of the First World War. ठीक है? Who co-edited the magazine Blast with Wyndham Lewis? So Ezra Pound is the one. ठीक है? Next. What was the title of Wyndham Lewis' novel that provides a depiction of artistic life in Paris and London? So this is Star. Next. Robert Graves' autobiography indicating the end of an era marked by First World War is titled Goodbye to All That. Next. Frederick Manning novel which uses colloquial language to depict the futility of war is titled Her Private's V. Which author work Disenchantment gives a key to the attitudes of the generation of writers who experienced the First World War? So this is C.E. Montag. Okay. Next, the legendary figure known as Lawrence of Arabia, who wrote the Seven Pillars of Wisdom, is so this is T.E. Lawrence. ठीक है. Next, Lewis Grassic Gibbon Scottish trilogy that shows the impact war on provincial life is titled A Squad Squire. Which work by Wyndham Lewis provides a challenging view of the intellectual collapse of the modern world? So Time and Western Man. ठीक है? Which author wrote the historical novel I Claudius and Claudius the God? So one of the most important work, Robert Graves. टाइटल बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे बेटा, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे. सिंपली नॉवेल का नाम दे रखा होगा एंड आपको राइटर को आइडेंटिफाई करना होगा, या राइटर का नाम दे देंगे, नीचे 4 नॉवेल दे देंगे, बोलेंगे कि इसमें से कौन सी एक नॉवेल इनकी नहीं है. सो आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं. ये सारी चीजें बेसिक है एंड आप लोग को इसको कुछ समझना नहीं है, बस याद कर लेना है, रट जाओ. ठीक है? क्योंकि मैं अगर आप लोग को बोलूंगी कि डेट्स याद करो, डेट्स याद करो, तो आप पूछो कि मैम डेट्स कैसे याद कर सकते हैं? बेटा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको याद करना होगा. आपको कोई वो डेट्स को घोल के पिला नहीं देगा. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम डेट्स नहीं याद होती. बेटा अगर आप डेट्स नहीं याद करोगे, क्रोनोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, तो कैसे उसको सॉल्व करोगे? ठीक है? और क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन एक ऐसी चीज है जिसको कोई आपको भुला के पिला नहीं सकता, आपको उसको खुद से रटना होगा. ठीक है? सो डेट्स को रट जाओ, बहुत आसान है डेट्स को रटना. मैं बताती हूँ कैसे. एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक याद रखना. टाइटल है ना, जैसे ये टाइटल लिखा हुआ है, इसके साथ मान लो डेट है यहाँ पे 1939. ठीक है? तो टाइटल के साथ आप इस बगल में डेट को लिखो. ठीक है? टाइटल के साथ इसको पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो. अब देखना जब आप टाइटल को पढ़ोगे ना, तो आपको डेट माइंड में खुद से आ जाएगी. अच्छा हाँ, इस टाइटल के साथ मैंने ये डेट पढ़ी थी. एक लगातार सबको एक साथ पढ़ना है. ठीक है? नेक्स्ट, Adolf Huxley was the grandson of which eminent Victorian philosopher and writer? So Thomas Huxley. Which of the following novels is not written by Aldous? So it is 1984. 1984 इनकी नहीं लिखी हुई है, इनकी लिखी मतलब कि 1984 इनकी नहीं लिखी हुई है, जॉर्ज ऑरवेल की है. ठीक है? जॉर्ज ऑरवेल की 1984 है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवेल एंड ये मेरी फेवरेट है. ठीक है? मुझे ये नॉवेल बहुत पसंद है, काफी ज्यादा शानदार तरीके से इन्होंने लिखी है. एंड बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू. ठीक है? इसका एक बहुत ही ज्यादा फेमस टाइटल है. चलिए, और आप लोग को एक फैक्ट बताती हूँ. आजकल वो जो बिग बॉस में दिखाते हैं ना, बिग बॉस की आंख, सो इसमें भी उसी का कॉन्सेप्ट है. ठीक है? इसमें ना थॉट पुलिस चल रहा है. ठीक है? आपकी सोच पर भी पुलिस लगी हुई है. लाइक अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी चिप्स खरीदने जाऊंगी, तो आपका जो सोच है वो सब कुछ पुलिस के पास जा रहा है. आप कहाँ तक सोच रहे हो? ठीक है? आपकी सोच भी पुलिस के कंट्रोल पे है, तो आप कुछ गलत नहीं सोच सकते. समझ रहे हो?
तो इस लेवल की साईफाई नॉवल लिखी है इन्होंने। साईफाई मीन साइंस फिक्शन नॉवल, ठीक है। सो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार नॉवल है एंड मैं रिकमेंड करूंगी आप लोग को पढ़ना चाहिए। कभी भी फ्री टाइम पे खरीद लो, बाय कर लो या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ो, लेकिन पढ़ो, बहुत अच्छी है। The title Brave New World is an ironic quotation from which Shakespeare play? So this is one of the question, ठीक है, जो कि नेट में पूछा गया था। So टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट से इन्होंने ये वाली लाइन उठाई है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट, in brave new world which group of people are conditioned to occupy intellectual position? So alphas, ठीक है। Which novel by Aldous provided a prophecy of a world of test tube babies, genetic engineering and social control? So this is Brave New World, ठीक है। इसमें उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबीज, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सोशल कंट्रोल के बारे में बताया है, ठीक है। What is the title of Aldous work that record his experience with hallucinogenic drugs? So Heaven and Hell. Next, which novel by Aldous Huxley appears to describe a society which is a genuine utopia? So this is Island, ठीक है। Next, in Brave New World, what is the motto of the world state? So community, identity and stability. This is the motto of the world state and ये तीनों चीज आप लोग को याद रखनी है। क्या पता एग्जाम में आप लोगों से पूछ दिया जाए, ठीक है। ऐसे ही सेम ऑप्शन नहीं, मतलब कि ऐसे ऑप्शंस रहे और आप लोगों से पूछ दिया जाए। तो कम्युनिटी, आइडेंटिटी और स्टेबिलिटी, CIS, कम्युनिटी, आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी, ये कहाँ आएगा? ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, ठीक है। CIS को याद रखना। Which of Aldous Huxley novel was many similarities with T.S. Eliot The Waste Land? So एंटिक है, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होती है। कल हम लोग थोड़ा सा और करेंगे राउटलेज की बुक को, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक अभी भी बाकी है। आई गेस और 2-3 वीडियो लगेगी और शायद और खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं जितना एमसीक्यूज डालू ना उतना कम है, क्योंकि ये बुक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो मैं कोई भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। मैं आप लोगों को एकदम बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करना चाहती हूँ, ठीक है। सो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और सब इस वीडियो का फायदा उठा सके और अपनी तैयारी को खूब मजबूत बना सके। एंड हाँ, मुझसे कोई भी गलती हुई होगी इस वीडियो में तो प्लीज मुझे माफ करना एंड प्लीज कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।